We need to stop saying women are bad drivers. अपने आसपास देखो कितने आदमी गाड़ी चलाते हैं और कितनी औरतें गाड़ी चलाती है, कितना बड़ा डिस्पैरिटी है इन द रेशियो. मतलब मोस्ट women in this country don't even get to drive. ठीक है, लाइक लड़कों के लिए ड्राइव करना नेसेसिटी है, बट लड़कियों के लिए ड्राइव करना प्रिविलेज है. तो अगर ये हमारी प्लेइंग फील्ड इतनी अनइक्वल है, देन यू कैन नॉट मेक सच स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दैट women are bad drivers. अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 10 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, एंड आउट ऑफ these 10 men 8 men drive, and out of these 7 women 1 woman drives, then these 8 men cannot generalize the whole gender on the basis of 1 woman. मतलब ज्यादा लड़के गाड़ियां चलाते हैं और कम लड़कियां गाड़ी चलाती है, इसका मतलब ये नहीं है दैट women are bad drivers. ये तो वही बात हो गई कि जस्ट बिकॉज हमारे देश में ज्यादातर खाना औरतें बनाती हैं, देन वी शुड से दैट men can't cook. ऐसे देखा जाए तो most people involved in road accidents are mostly men. तो should we say that men are bad drivers? No, because we all know कि अगर इतने सारे मेल ड्राइवर्स हैं तो उनमें से गुड ड्राइवर्स भी होंगे, उनमें से बैड ड्राइवर्स भी होंगे. बिकॉज हमें मेन को जनरलाइज नहीं करना, लेकिन when it comes to women, we will take one case study and then we will generalize the whole gender. अगर आपको रोड पे एक बैड मेल ड्राइवर दिखता है, आप कभी भी उसके जेंडर पे नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आपको एक बैड ड्राइवर मिलता है who happens to be a female, then all the attacks are on her gender. I think we men are just fundamentally not very comfortable with women driving. अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो और आपको भी गाड़ी चलानी आती है और आपकी बहन को भी गाड़ी चलानी आती है, your family will always prefer that you drive the car and not your sister, even if your sister is a better driver than you. In fact, even in relationships, there are so many guys जो uncomfortable हो जाते हैं इस बात से that their girlfriends are driving them around. Also, let's acknowledge the sheer fact that a woman out on the road is much more unsafe than a man out on the road, whether or not she's driving. So imagine that this is a skill that everybody tells you कि ये तो सिर्फ लड़कों का काम है, ये तो सिर्फ लड़कों का काम है, and then you get out on the roads and you're constantly worrying कि अगर मुझसे एक गलती हो जाती है, and I'm surrounded by so many men out there and it's an unsafe world, तो मेरा क्या होगा? A male driver versus a female driver में हम always we give more leeway to the male driver even if he's at fault. For example, अगर एक एक्सीडेंट होता है, आप उतना नहीं भड़केंगे अगर आपकी गाड़ी एक मेल ड्राइवर ने ठोकी है, बट अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी हल्की सी एक फीमेल ड्राइवर ने ठोक दी, योर रोड रेज विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल. लाइक द अमाउंट ऑफ अब्यूज दैट women go through on the road, the amount of bullying that women go through on the road. There are countries where women are legit not allowed to drive. And in this social context, when you say things like women can't drive, it takes us decades back. It pulls us back. And if you cannot encourage women to be more confident drivers, the least you can do is not pull them back. Hi guys, this was probably the first video on my channel so far जिसमें मैंने कुछ funny या कुछ comedy नहीं करी है. But I think this was an important thing to be said. मैं ये काफ़ी टाइम से इस बारे में बात करना चाहता था. And if you guys agree or whatever perspective that you have, please comment down below. Especially women out there. I think there are still things that we men don't understand about what women drivers go through. So we all learn through perspective. So please comments में बताइए आपको और क्या feel होता है इस बारे में. Also, please make sure that you appreciate the women drivers around you and give them some confidence. क्योंकि I think as a society हम लोग उनको confidence ही नहीं देते हैं. And if my opinions make sense, then please tell me and I will make more such videos. And if you want me to make more such videos, then suggest what I should talk about. Please like, comment, share, subscribe. Please.